Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimati Bhakti-yoga Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Vacharine Nirvisheshna Shantamari Vishachari Shantanine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 6, the killing of the demon Putana, texts 22 to 23, translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. तो हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 22 और 23 आज पाठ कर रहे हैं, जिसका शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य दिया गया है। और कृष्ण की मूर्ति श्री श्रीमद् श्रील भक्ति-वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। So we have what, 22 for repeating? Both 22 and 23 both. Will we repeat both? Yes. Why not? Very good. Okay, try to repeat. हम सब प्रयास करेंगे, ये दोनों श्लोक लिखे हुए हैं बोर्ड पे 22 और 23, उसको रिपीट करेंगे। Avyat ajongri manimangstava janvatoru Avyat ajongri manimangstava janvatoru Yagyochuta katitatam jatarang hayashyaha Ritkeshavastvaruru ishainastu kantam Vishnu bhujang mukham murukrama ishvarakam Chakyagratak sagado harirastu paschyat Tvatparshvayo danurasi madhuayannascha Kuneshu shanka urugaya upayupendra Tarkshakshitao halararak purushak samanta Yat may protect. No, you should just repeat when they repeat. सिर्फ महाराज पढ़ेंगे आप सुनिएगा, फिर जब मैं पढ़ूंगा तब आप बोलेंगे। So, Avyat may protect. You do Hindi, they repeat. What's the problem? रक्षा करे, Ajaha, Lord Aja. भगवान अजय, Angri, legs. पाव, Maniman, Lord Maniman. भगवान महिमा, Tava, your. तुम्हारे, Janu, knees. घुटने, Ataha, thereafter. तत्पश्चात, Uru, thighs. जांगे, Yagya. Well, when there's so many names of the Lord, you just repeat the name, or I just speak the name, you don't have to repeat. Because it's all about different names of the Lord. Okay? Can you tell me? तो अगर भगवान का नाम आएगा तो भगवान का नाम दोहराने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान के नाम अनेक हैं, तो वो मत दोहराइए। Okay. Yagya is Lord Yagya. Achyuta, Lord Achyuta. भगवान अच्युत, Katitatam, the upper part of the waist. कमर का ऊपरी हिस्सा, Jataram,
abdomen. उदर Hayasya, Lord Hayagriva. भगवान हयग्रीव Rid, हृदय the heart. हृदय Keshava, Tvat, your. तुम्हारा Uraha, पूरः chest. वक्षस्थल Isha, ईशः the supreme controller, Lord Isha. परम नियंता भगवान ईश Inaha, इनः Surya, the sun god. सूर्य देव Tu, दू but. लेकिन Kantam, कंठम neck. गला Vishnu, Lord Vishnu. भगवान विष्णु Bhujam, भुजम arms. बाहें Mukham, मुखम the mouth. मुंह Urukrama, उरुक्रम Lord Urukrama. भगवान उरुक्रम Ishvara, ईश्वरः Lord Ishvara. भगवान ईश्वर Kam, काम head. सिर Chakri, चक्री the carrier of the disc. चक्र धारण करने वाला Agrataha, अग्रतः in front. सामने Sahagada, सहगदा the carrier of the club. गदाधारी Hari, Hari. Lord Hari. भगवान हरि Astu, अस्तु may he remain. रहते हैं Paschat, पश्चात on the back. पीछे Tvat Parshvayo, तत्पार्श्वयोः on both sides. तुम्हारी दोनों बगलों में Dhanuasi, धनुवसी the carrier of the bow and the sword. धनुष तथा तलवार धारण करने वाला Maduha, मधुहा the killer of the demon Madhu. मधु असुर का वध करने वाला Ajanaha, अजनः Lord Vishnu. विष्णु Cha, च and तथा Koneshu, कोनेषु in the corners. कोनों में Shankaha, शंखः the carrier of the conch shell. शंखधारी Urugaya, उरुगाय who is well worshipped. पूजित Upari, ऊपरी above. ऊपर Upendra, उपेंद्र Lord Upendra. भगवान उपेंद्र Tarksha, राक्ष्य Garuda, गरुड़ Shitao, शितो on the surface. पृथ्वी पर Haladara, हलधर Lord Haladar. भगवान हलधर Purusha, पुरुष the supreme person. परम पुरुष Samanta, समन्ता on all sides. सभी दिशाओं में Translation. So we go sentence by sentence. This is a long purport, long translation. Shukadeva Goswami informed Maharaj Parikshit that the gopis, following the proper system, protected Krishna, their child, with this mantra. तो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया कि गोपियों ने कृष्ण की रक्षा उपयुक्त विधि के अनुसार निम्नलिखित मंत्र द्वारा की. So this is the mantra, these two verses. दो May, श्लोक मंत्र है. yes, may Aja protect your legs. अज तुम्हारी पाँव की, May Maniman protect your knees. मणिमान तुम्हारे घुटनों की, Yagya, your thighs. यज्ञ तुम्हारी जांघों की, Achyuta, the upper part of your waist. अच्युत तुम्हारी कमर के ऊपरी भाग की, And Hayagriva, your abdomen. तथा हायग्रीव तुम्हारे उदर की रक्षा करे. May Keshava protect your heart. केशव तुम्हारे हृदय की, Isha, your chest. ईश तुम्हारे वक्षस्थल की, The sun god, your neck. सूर्य देव तुम्हारे गले की, Vishnu, your arms. विष्णु तुम्हारे भुजाओं की, Urukrama, your face. उरुक्रम तुम्हारे मुंह की, And Ishvara, your head. तथा ईश्वर तुम्हारे सिर की रक्षा करे. May Chakri protect you from the front. चक्री आगे से, May Sri Hari, Gadadari, the carrier of the club, protect you from the back. गदाधारी हरि पीछे से, And may the carrier of the bow, who is known as the enemy of Madhu, and Lord Arjuna, the carrier of the sword, protect your two sides. तथा धनुर्धर मधुहा
एवं खड़ग भगवान विष्णु दोनों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। May Lord Urugaya, the carrier of the conch shell, protect you from all corners. शंखधारी उलूगाय समस्त कोनों से तुम्हारी रक्षा करें। And may Upendra protect you from above. उपेंद्र ऊपर से, May Garuda protect you on the ground. गरुड़ धरती पर, And may Lord Haladara, the Supreme Person, protect you on all sides. तथा परम पुरुष हलधर चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। Purport. Even in the houses of the cultivators, who were not very advanced in the modern ways of civilization, the ladies used to know how to chant mantras to give protection to children with the help of cow dung and cow urine. तात्पर्य, खेतीहरों के घरों में भी जो सभ्यता की आधुनिक विधियों में बड़े चढ़े नहीं थे, स्त्रियां गोबर तथा गौमूत्र के द्वारा मंत्र पढ़कर बच्चों की रक्षा करना जानती थी। This was a simple and practical way to give the greatest protection from the greatest dangers. बड़े से बड़े खतरों से महती सुरक्षा प्रदान करने की ये एक सरल तथा व्यवहारिक विधि थी। People should know how to do this, for this is a part of Vedic civilization. ऐसे कैसे करना है लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ये वैदिक सभ्यता का एक अंग है। Such a simple purport. बहुत ही सरल तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी ने दिया। Yes, very important point that house of cultivators means those who do agriculture, simple people just working the land. तो इस सरल तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी दिया। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो कृषि करते हैं, जो खेती करते हैं, वो सभ्यता में इतने उन्नत नहीं होते। So, as he says, they're not very advanced in the modern ways of civilization. तो आधुनिक विधियां जो है सभ्यता के, उसमें वो इतने दक्ष नहीं होते। Generally, we think if somebody is not very advanced in the modern ways of civilization, he's a primitive person. साधारणतः हम ये समझते हैं कि जो आधुनिक सभ्यता में इतना दक्ष नहीं है, वो एक पुरातन व्यक्ति है। He will not be successful in life. और वो जीवन में कामयाब नहीं हो सकेगा। You have to get to know technology. तो आपको जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तभी जो है आप जीवन में सफल हो सकते हैं। How many institutes of technology you have here? तो यहाँ पर कितने ऐसे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं जो कि टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं? Countless. असंख्य। Yes. So, and of course, people think, unless we get this kind of education, then what life is for? और लोग सोचते हैं जब तक हमें ये शिक्षा नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन व्यर्थ है, जीवन का क्या काम? Then you don't get a good job. तो एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, You don't make good money. आप अच्छे पैसे नहीं कमा पाएंगे, And if you don't make good money, then what's the use of living? अगर अच्छे पैसे नहीं कमा पाएंगे तो जीवन का मतलब ही क्या रहेगा? Because unless you have money, you cannot enjoy life. अगर पैसे नहीं होंगे तो जीवन में इतनी नहीं कर पाएंगे। More or less, is that correct? Correct analysis? एक तरीके से ये ठीक है, ठीक सोचना है। Or no? या नहीं? Yes? हाँ या नहीं? Yes or no? हाँ No, but the analysis is correct. गलत है, लेकिन जो विचार ये ठीक है। That's how life is today, no? आज का आधुनिक समाज तो ऐसे ही है। Even in India, that's the problem. भारत में भी खासकर। And Prabhupada was many times lamenting, even 50 years ago, practically. 50 साल पहले प्रभुपाद जी भी शोक किया करते थे। Yeah, time is passing. I mean, 50 years ago means 1970. फिर 1970 की बात। And he already was seeing that this lifestyle in India is changing. और उसी समय प्रभुपाद जी देख रहे थे कि जो भारत में भी जीवन है वो बदल रहा है। People should know all this, he says. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि आजकल के लोगों को इस वैदिक सभ्यता का ज्ञान It's part जानना of चाहिए। Vedic civilization. ये वैदिक सभ्यता का एक भाग है। But his lamentation was that Vedic lifestyle is getting lost. लेकिन उनका ये शोक था कि जो वैदिक की जानकारी है, सभ्यता है, वो खोती जा रही है। People are no longer interested in leading such a lifestyle. और ऐसा जीवन जो में बहुत कम लोगों की रुचि जो है वो अब है, रुचि घटती जा रही है। Just to work the land and protect cows, that's for people who are
stupid, more or less. और मूर्ख लोगों के लिए है कि वो जमीन रखें और वहाँ कृषि करें और वहाँ गायों को पालन करें। They don't have the capacity to go to university and study. ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कि किसी कॉलेज में दाखिला नहीं करा सकते और पढ़ नहीं सकते। They don't understand technology. और वो औद्योगिकरण टेक्नोलॉजी को नहीं समझते, वो नहीं समझा सकते। Maybe the highest level of technology is to make a cycle and a sewing machine. और उनके लिए जो है सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि या ज़्यादा वो एक साइकिल बना ले या सुइंग मशीन बना ले। But not electric. Like Sewing machine, you go with your feet. और वो ऐसी सिलाई की मशीन जिसमें आप नीचे से पैर से दबाते हैं तो वो जो है वो घूमता है और वो सिलाई होती है। But I guess you don't have these anymore, right? They're not making them anymore. लेकिन अब जो है वो बनना भी बंद हो गया। Anyway, 50 years ago, Prabhupada was saying that was the technology in India. They know how to make cycle and sewing machine. तो भारत में उस that's समय what क्या I'm saying. टेक्नोलॉजी होती थी कि प्रभुपाद जी कहते थे 50 साल पहले भारत में इतनी टेक्नोलॉजी की साइकिल बना सकते हैं, सिलाई की मशीन बना सकते हैं, इतना ही भारत में जो है योग्यता होती थी। But now 50 years have passed. 50 साल बीत गए हैं We have advanced और very much. हम आगे बढ़ चुके हैं। So much so that even the Americans will come in, the Germans, they like to get Indians to do computer technology in their country. और जो अमेरिकी के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, वो भी भारतीय के जो आईटी के प्रोफेशनल है, कंप्यूटर के प्रोफेशनल है। IT professional, that's the word. अब इसका हिंदी में बात तो शायद नहीं कर पाऊँ। He was also an IT professional. Huh? He was also an IT So that he knows. Did you get some offers from America, from Germany? Huh? Yes. Yes. So, did you earn a lot of money? I didn't go. So you're not very intelligent. What are you doing? You give up everything, become a brahmachari. That's, like 100 years ago. So you try to summarize that. हम आज कहने की कोशिश कर रहे हैं कि खासकर यूएस और जर्मनी में भी भारतीय खासकर जो आईटी प्रोफेशनल है, जो कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की जानकारी रखते हैं, उनका आज भी काफी डिमांड है कि भारत में इसकी पढ़ाई काफी होती है। 100 साल में हमने इतनी तरक्की की है। लेकिन अगर तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भक्त बन जाए और अगर मंदिर में वो जुड़ जाए और ब्रह्मचार्य आश्रम में आ जाए तो लोग समझेंगे यार तुमने तो जिंदगी 100 साल पीछे ले गए। क्योंकि जो है वो तुम कैसे कपड़े पहनते हो, क्या कार्य करते हो, कुछ कमाने के लिए नहीं होता है। So that doesn't mean we don't like technology. इसका मतलब ये नहीं है कि जो है हम टेक्नोलॉजी को पसंद नहीं करते। I'm surrounded by technology. और मेरे चारों तरफ टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफोन है, Oh लैपटॉप है yes, I like it very much. और हमें बहुत अच्छा लगता है। It's quite useful for और my service. प्रयोग में आता है हमारी सेवाओं के लिए। But unless it would be useful, then who cares? लेकिन अगर इस्तेमाल में नहीं आ सके तो फिर क्या परवाह करेंगे? And of course, we also know simultaneously that just knowing technology is not the perfection of life. और टेक्नोलॉजी जानना हम ये भी जानते हैं साथ साथ कि सिर्फ टेक्नोलॉजी सीखना जीवन की परिकाष्ठा नहीं है, जीवन की सिद्धि नहीं। And it will not protect you from the dangers of the material world. और ये आपकी रक्षा इस संसार के जो डेंजर है, संसार के जो खतरे हैं, इससे आपकी रक्षा नहीं कर सकता। Or as we can say, Robert says, the real problems. तो जीवन की जो असली समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे आपकी रक्षा नहीं कर सकते। तो जो असली समस्याएं हैं, इससे आपकी रक्षा नहीं कर सकते। How do you read Hindi में? I know. I mean, after 50 years of Sanskrit, I know what mrityu and jara. I will quote this, but you went ahead because you think you're very intelligent. So don't be over-intelligent. Just translate what I say, not what you think. Now, you have to say that. तो मैंने कहा कि जीवन की असली समस्या और उसमें मैंने जोड़ दिया जरा मृत्यु जन्म व्याधि। तो महाराज ने कहा ये तो मैंने बोला नहीं था। ज़्यादा बुद्धिमान मत बनो, जो मैं बोल रहा हूँ उसका बिल्कुल सटीक वैसा ही होगा। तो मैं क्षमा मांगता हूँ महाराज से जो है मैंने। I just said the real problems of life.
तो जीवन की जो असली समस्या है And- उस हमें टेक्नोलॉजी नहीं बचा सकती। What are these? Don't say it. अरे क्या है मैं नहीं बोल सकता। The real problems are not how do I get a better job? जीवन की असली समस्या ये नहीं है कि हमें कैसे अच्छी नौकरी मिलेगी How do I cure cancer? और कैंसर का कैसे इलाज होगा How do I find the perfect wife? और हमें सबसे अच्छी पत्नी कैसे मिलेगी And even how to get, the best education in technology for my children. और बच्चों के लिए सबसे अच्छी पढ़ाई कहाँ हो सकती है, कहाँ हम टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, ये जीवन की असली समस्या नहीं। And get a big house with a swimming pool. और एक बड़ा घर जिसमें स्विमिंग पूल हो And a Mercedes car. और एक मर्सिडीज गाड़ी हो Or what's the best? BMW? या BMW You can हो। take your pick. आप Some German car. अपना चयन कर सकते हैं, कोई जर्मन गाड़ी Or an Italian car. और इटालियन गाड़ी But that's high up. Ferrari and, Ferrari or Lamborghini. Then you spend millions Porsche. and millions. Porsche is German. So anyway, that is not the problem. लेकिन ये परेशानी नहीं। Yes, what are the real problems? Very simple. Krishna explains in Bhagavad Gita because they are for all time, not just for now. तो भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता में बताते हैं जीवन की असली परेशानी क्या है। ऐसी परेशानी जो हर समय में लागू होती है, ऐसे नहीं कि आज और कल नहीं। And now it's your turn. Janma, Mrityu, Jara, Vyadi, Dukkha, Dosha, Anudarshanam. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। Yes, Krishna says, Darshanam. You have to always see that. Don't forget it. Don't close your eyes. तो भगवान कह रहे हैं इनको देखिए कि कैसे जीवन की असली समस्या है, इनके प्रति अपनी आंखें मूंदे नहीं। These are dukkhas and doshas. ये दुख भी है और दोष भी। Your translation is it's almost the same, Sanskrit and Hindi. So suffering or misery, and it's a defect actually. तो ये दुख भी है और ये दोष भी है। Yeah, it's a defect because for the soul, the spirit soul, these are not natural qualities. ये दोष भी है क्योंकि जीवात्मा के लिए स्वाभाविक नहीं है। These are things that happen to the body. और ये शरीर के साथ होता है, आत्मा के साथ नहीं होता। These four problems Yes, are only happening for the material body. ये जो चार परेशानियां हैं सिर्फ शरीर से संबंधित हैं। And the soul is not born, doesn't die, doesn't get old, and has no disease. तो आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा बूढ़ी नहीं होती है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा को जो है कोई बीमारी नहीं होती। So, if we know that, then of course the question has come, so then why do I suffer from these things? तो जब ये आत्मा को होता ही नहीं और मैं आत्मा हूँ, तो फिर हम क्यों इसको भोगते हैं? That's real intelligence. तो ये सोचना असली बुद्धिमत्ता है। Like Sanatana Goswami when he approaches Chaitanya Mahaprabhu. तो जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, Actually, two questions. तो दो प्रश्न पूछते हैं। Keami, who am I? के आमी मैं कौन हूँ? And Kemane, what is it? Japat. That's it. Why do I suffer from the threefold miseries? तो पहला प्रश्न पूछते हैं कि मैं कौन हूँ और दूसरा पूछते हैं कि जो जीवन के तीन क्लेश हैं, मैं तीन क्लेश मुझे क्यों आते हैं? And he says, if I don't have answers to this, if I don't know this, then what benefit can I get? Hita, what kind of benefit? तो अगर मैं इस तीन प्रश्नों का उत्तर नहीं जान पाऊँ, तो फिर जीवन को मैंने क्या फायदा उठाया असली ज्ञान प्राप्त करने का? I may get a lot of money and I may become famous and very strong. Is that a real benefit? तो मैं पैसे कमा सकता हूँ, शरीर को तंदुरुस्त कर सकता हूँ, लेकिन जीवन का क्या असली लाभ उठाना ये है? Yes, there are benefits, but they will go away quite quickly. ये लाभ तो हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी जल्दी हमसे छीने जा सकता है। And even if you can manage to have them all your life, which is rare, और वो और भी दुर्लभ है कि पूरे जीवन भर हम ये लाभ हमारे साथ रहे। they will be finished when the body is finished. और आखिरी में शरीर के साथ, मृत्यु के साथ ये सब खत्म होने ही है। Now we have, you may have heard the name of Warren Buffett, big investor in America, one of the richest people on this planet. तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से गणना होती है, जो कि एक इन्वेस्टर, इनका नाम वॉरेन बफेट है, तो अमेरिकी इन्वेस्टर है।
I just saw a little news clip yesterday. He has $130 billion in cash and doesn't know what to do with it, how to invest it. He's looking for good investment. You can contact him. Amazing. You know, he doesn't, and he's over 80 years old. तो 80 साल के वो बूढ़े हैं और उनके पास कल मैं बता रहे थे कि ऐसे मुझे खबर में पढ़ने को आया कि सिर्फ कैश प्रॉपर्टी और बाकी वेल्थ प्रॉपर्टी कैश सिर्फ कैश में नकद में उनके पास 130 अरब डॉलर है. Wow. If I can just get 1 million of the 130 billion, I would be very happy. तो और उसको ये नहीं पता कि 130 अरब डॉलर वो कहाँ खर्चे. Well, maybe with one, but if you have 130 billion, it's a problem. What to do with it? और सबसे ये उनको ये परेशानी है कि मैं इतने पैसों का करूँ क्या? Unless you ask him, he can tell you what to do with it. मास कह रहे हैं कि वो हमसे पूछ सकते हैं क्या किया जाए. Or you can ask me, I can also tell you what to do. मास कह रहे हैं मुझसे सलाह ले सकते हैं, हम बता सकते हैं. Or you can ask any of you, no? Any devotee will know what to do with it. हर वक्त बता सकता है कि इन पैसों को क्या कर सकते हैं. No, but he wants to, of course, make more money with it. 130 billion is not enough. और इसकी मानसिकता क्या है? वो चाहता है कि 130 अरब डॉलर में से ऐसे इन्वेस्ट करें कि उसका 2 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 8 गुना हो जाए. Actually, it is called madness. इसको पागलपन कहते हैं. I mean, you know, you're over 80 years old, you're on the verge of death. और आप 80 साल के ऊपर हो गए और आप मरने वाले हैं, आपका एक पैर कब्र में है. And your problem is how to invest $130 billion. और आप ये सोच रहे हैं कि 130 अरब डॉलर का क्या किया जाए? Which you're going to lose maybe tomorrow, in a few हो सकता है years. कि कुछ सालों में नहीं तो कल ही उसको खो दे. Let's say now you invest and you get 10 times, और अगर आपने सोचा उसका निवेश किया और आपको 10 गुना ज्यादा मिल गया and then you die. और आप फिर मर गए. This is crazy, no? ये पागलपन. You didn't prepare for the most important point that will come is to leave the body. और जो जीवन का असली पॉइंट है कि कैसे तैयारी करें मृत्यु के लिए, उसके लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया. What will those $130 billion do to save you or to protect you? That's about protection. तो वो 130 अरब डॉलर कैसे आपकी रक्षा करेंगे मृत्यु से, उसके बारे में तो आपने विचार ही नहीं. They will do nothing. और वो कुछ नहीं कर सकते. You will just maybe even die like a dog. हो सकता है कि आपकी मृत्यु एक कुत्ते के समान. I mean, you know, we know there's so many types of death and some are not very pleasant. Most of them, practically all of them, are not very pleasant. हम जानते हैं कई किस्म की मृत्यु होती है और उसमें से कुछ अच्छी नहीं होती. देखा जाए तो काफी अच्छी नहीं होती. और गंभीरता से देखा जाए तो कोई भी अच्छी नहीं होती. Sometimes it looks like they're more or less pleasant. तो देखने में जो है लगता है कि ये अच्छी है और ये खराब. Like not long ago, again, somebody else was famous who died. And then the family said, he just died peacefully in his sleep. तो देखने में लगता है कि जो बड़ी अच्छी मृत्यु हो गई उनकी. अभी हाल ही में एक प्रसिद्ध आदमी की मृत्यु हुई थी और उनके परिवार वाले कह रहे थे कि नींद में कब उनकी सांसें छूट गई पता ही नहीं चला. बड़ी शांति में मृत्यु हुई. Who knows what has been gone inside on the psychic, the subtle body level. और कौन जानता है कि एक सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म तरीके से कैसे उसने जो है पीड़ा सही. Yes, there was no accident, there was no horrible disease. कोई जो है वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कोई गहरी बीमारी नहीं थी. He just, went to sleep and didn't wake up. और सोने के लिए गए और उठे नहीं. So is that a great advantage? I mean, is that success in life? क्या वो जीवन की सफलता है? I just want to, die peacefully. Then my life is successful. और लोग सोचते हैं कि हम जीवन को सफल मानेंगे अगर मृत्यु जो है शांति से हो जाए. That means you're ignorant. इसका मतलब क्या है कि आप अज्ञान. You don't know that you shouldn't die. और आप ये नहीं जानते हैं कि आपको तो मरना ही नहीं है. Yes. मरना आपके नहीं है. I mean, the fact that you have a material body which will die, that's your real problem. और आपकी परेशानी क्या है कि आपके पास एक ऐसा शरीर है जिसको मरना पड़ेगा. And you don't know that the problem will continue. और
सबसे बड़ी बात ये भी आप ये नहीं जानते हैं कि ये परेशानी वहाँ खत्म नहीं है मृत्यु के साथ, आपको फिर शरीर मिलेगा और फिर मरना पड़ेगा, ये चीज चलती रहेगी। Unless you solve it now, जब तक आप इसका समाधान नहीं करें, and you can only solve it as a human being. और आप इस मनुष्य शरीर में उसका समाधान कर सकते हैं। If you don't solve it, अगर आप नहीं समाधान करते हैं, then you'll get another body and the problem will continue. तो क्या होगा कि आपको एक और शरीर मिल जाएगा और फिर शरीर के साथ आपको फिर से 4 चीजें प्राप्त होंगी। And the next body that you don't know which type it will be. और ये नहीं पता होगा कि अगला शरीर कौन सा होगा। Of course, you are all fortunate, you have taken so much prasadam, you've definitely become a human being again. आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आप इतना प्रसाद लिया है कि जो है निश्चित रूप से आपको दोबारा प्रसाद लेने के लिए और शरीर मिलेगा मनुष्य का। But even that is not really wanted. लेकिन जो है वो असली में हम ये नहीं चाहते। Because who knows what circumstances, how Kali Yuga has advanced when you are, I mean, you know, then you may become forgetful again. It's not a good idea. ये भी अच्छा विचार नहीं है कि उनको दोबारा शरीर मिलेगा और फिर कलयुग कितना बढ़ चुका होगा और फिर आप हो सकता है भक्तों के संग में ना आए और हो सकता है कि भगवान का विस्मरण हो जाए, सब चीज आप भूल जाएं। No, the acharyas tell us, you solve your problem now. आचार्य कहते हैं आपको अपनी समस्या का समाधान करना है अब। This should be the last birth. और ये आखिरी जन्म होना चाहिए। Not one more. Not even in a devotee family. और भक्त के परिवार में नहीं। Of course, it's bad. If you have to be born again, that's what we want to, you know, what we should aspire for that. तो फिर तो भक्त के परिवार में, नहीं तो वो भी नहीं। And obviously, it's up to Krishna where we go. और वास्तव रूप में तो अंततः कृष्ण के ऊपर ही है कि हम कहाँ जाते हैं। But as it, you know, this whole, these two verses here, they are all the ideas to protect from danger. तो ये दो श्लोकों में हम देखते हैं कि कैसे गोपियां जो हैं वो बताती हैं कि हमें ऐसी रक्षा कैसे मिलती है। So yes, one can do this in a very easy way as it is described here. और ये कर सकता है बहुत आसानी से जैसे यहाँ पर वर्णन है। And it's much more effective than just to get a good job or to become very proficient in technology. और ये ज़्यादा अच्छा नौकरी से, ज़्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी में पढ़ने से ज़्यादा प्रभावशाली है, उसकी सुरक्षा ज़्यादा है। If somehow or other we can get the protection from the Lord, और किसी न किसी तरीके से हमें भगवान से अगर सुरक्षा प्राप्त हो जाए, then basically our problem is solved. तब हमारे मूल रूप से समस्याएं का समाधान हो जाए। We have some nice verses here. हमारे बहुत सुंदर अलग-अलग श्लोक हैं to illustrate that. One इस is चीज को from साबित करने के लिए। Chaitanya Charitamrita, and it's from the 22nd chapter. Let's see why this is. 1 second here. It's not here. One of the two. This one. It's from. Oh, I have it here. There's so much technology. I already get confused. Yes, this is from Chaitanya Charitamrita, 22nd chapter of Madhya Leela. Lord Namachandra speaking. Of chapter number 22:34. तो ऐसे असंख्य श्लोक हमें शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। महाराज अभी उद्धृत कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत में से मध्य लीला के 22वें अध्याय में से 34वां प्यार संख्या। Everybody got on their phone. They got the verse. I don't even have to say it. तो श्री रामचंद्र ये श्लोक पढ़ रहे हैं। Yes. बोल रहे हैं, सॉरी। Sakrit eva prapano yas tasvasmiti yachate avayam sarvada tasmai dadamyatad vratam mama. It is my vow that if one only once seriously surrenders unto me, saying, "My dear Lord, from this day I am yours," and prays to me for courage, I shall immediately award courage to that person, and he will always remain safe from that time on. भगवान श्री रामचंद्र ये श्लोक बोल रहे हैं, युद्ध कांड में से है, 18वें अध्याय में से 33वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री राम कह रहे हैं कि ये मेरा व्रत है। अगर कोई व्यक्ति गंभीरता से मेरी शरणागति लेता है और मुझे कहता है कि प्रिय भगवान, आज से मैं आपका हूँ, और मुझसे प्रार्थना करता है शक्ति के लिए, तो मैं उसको तुरंत शक्ति प्रदान करता हूँ और उस समय के उपरांत वो सुरक्षित रहेगा। Oh. Yes, you said a very important word. You
If I say it, you don't need to translate because everybody will understand Sharanagati, to surrender to the Lord. So, yeah. तो इसलिए मैं यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कोई भी शरणागति ले तो ये शब्द महत्वपूर्ण है। So that's what Krishna recommends in Bhagavad Gita, of course. और यही भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी इस बात की चर्चा करते हैं। And sometimes we may wonder, why is he demanding this surrender? और कभी-कभी हम सोच सकते हैं कि क्यों भगवान हमसे शरणागति मांग रहे हैं? Yeah, sarva dharman parityaja. I have to give up all kinds of dharma. और भगवान कह रहे हैं कि सभी धर्मों को त्याग दो। तो कोई सोच सकता है कि मैं कैसे सब धर्मों को त्याग दूं? And then he says, Mam ekam sharanam vraja. Just exclusively, only to me you surrender. और आप क्या करें कि एकमात्र सिर्फ मेरी ही शरण लें। So, it's not so easy. तो कोई सोच सकता है कि ये इतना आसान नहीं। And it sounds quite selfish. Only to me, not to anybody else, just to me, only to me. तो सुनने में ऐसा लग सकता है कि भगवान जो है वो बहुत स्वार्थी हैं। वो कह रहे नहीं, सिर्फ मेरी ही शरणागति लेनी है और दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। Why does he want everybody to surrender to him? तो क्यों चाहते हैं कि हर कोई उन्हीं का आश्रय ले, उन्हीं को शरणागत हो? Just to exploit all the servants? ताकि उनका शोषण कर सकते हैं अपने सेवकों का? Actually, no. It's just the opposite. Krishna, he will give protection if we do this. लेकिन इस विचार से बिल्कुल उल्टा है। अगर हम भगवान का शरण लेते हैं, Mokshayishyami, I will protect you. भगवान कहते हैं मोक्षयिष्यामि, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। And one of the items of this Sharanagati process is Rakshashititi Vishvasa. Have the firm conviction, he will protect me. तो शरणागति का ये एक अंग है, रक्षिति विश्वासो, ये विश्वास रखना कि कृष्ण मेरी रक्षा करेगा। So that is actually the reality, that if we surrender to the Lord, then automatically, it's just natural, he will protect us. तो ये विज्ञान है कि अगर हम भगवान की शरणागति लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से भगवान हमारी रक्षा करेगा। So we have one more we can do, I think. Time is running out so fast. This is from the first canto of Srimad Bhagavatam. I had it. I'm sure. See that I have it here. Yes, this is from the prayers of Queen Kunti. Actually, before that, when Uttara is taking shelter of the Lord, being attacked by the Brahmastra. तो एक और प्रार्थना महाराज बता रहे हैं जो कि भागवतम के पहले खंड में से है, 8वें अध्याय 8वें श्लोक संख्या है, जिसमें माता उत्तरा, कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में से पहले माता उत्तरा जब उनके गर्भ में राजा परीक्षित थे और वो जो है वो भगवान के पास जाती हैं रक्षा के लिए, जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र फेंकते हैं उनके गर्भ को नष्ट करने के लिए। So 188 in the purport Prabhupada says that all the members of the family of the Pandavas were completely dependent on the protection of the Lord, and therefore the Lord protected all of them in all circumstances. तो इस श्लोक 188 पहला स्कंद 8वां अध्याय 8वां श्लोक संख्या में तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो पांडवों के परिवार के जितने भी सदस्य थे वो पूर्ण रूप से भगवान की रक्षा के ऊपर निर्भर थे, इसलिए भगवान उनको हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करते थे। The Lord protects everyone, but one who depends completely upon him is especially looked after by the Lord. भगवान हर किसी की रक्षा करते हैं, लेकिन जो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर करता है उसका विशेष ध्यान भगवान रखते हैं। The father is more attentive to the little son who is exclusively dependent on the father. तो पिता जो है उस छोटे बच्चे के प्रति ज्यादा ध्यान रखते हैं जो कि पूर्ण रूप से अपने पिता के ऊपर निर्भर होता है। So that is also natural. Sometimes, in this kind of, when this is said, then also the question comes up, the Lord says he's impartial. Why then is he partial to the devotees? तो ये उत्तर उस प्रश्न का भी है जिसमें लोग पूछते हैं कि अगर भगवान जो है वो निरपेक्ष हैं तो ऐसा क्यों दिखता है कि भक्तों के प्रति जो है वो भेदभाव करते हैं। So that one may even criticize. तो कोई निंदा भी कर सकता है इस बात के। Prabhupada says, no, it's natural. प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, ये स्वाभाविक है किसी के लिए भी।
You may like, a person may even like or protect all children, for example. तो हो सकता है जैसे एक पिता हर बच्चे का ध्यान रखे, उसकी रक्षा करे. But there's a special consideration if they're your own children. And don't criticize because it's natural. तो हो सकता है कि आदमी सभी बच्चों का ध्यान रखे, लेकिन स्वाभाविक होता है कि अपने बच्चों का ध्यान ज्यादा रखता है. So the Lord, yes, sama sarveshu bhuteshu, He's taking care of every single living entity. तो जैसे भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि सभी जीवों के प्रति समान है. Even the demons, they eat, they get air to breathe, they get water to drink. So who's providing? It's the Lord. तो जैसे हम देखते हैं कि जो असुर हैं, भगवान उनका भी ध्यान रखते हैं. जो खाना खाते हैं, जो सांस लेते हैं, जो जल पीते हैं, इनको देने वाला कौन है? इनको देने वाले तो भगवान है. So then one may think, well, then what's the difference? Why should I become a devotee? तो कुछ हो सकता है कि मैं भक्ति क्यों बनूं जब भगवान असल को भी दे रहे हैं. Krishna's protecting everybody, demon or devotee, so I rather may be a demon. I can enjoy life like anything and be protected also. तो हो सकता है कि कोई सोचे कि जब भगवान देव असुरों का भी ध्यान रखते हैं और भक्तों का भी ध्यान रखते हैं, संभाव एक तरीके से ध्यान रखते हैं, तो फिर मैं भक्त बनूं क्यों? मैं खूब इंद्र तृप्ति करूंगा, एक आसुरिक जीवन जीऊंगा और भगवान फिर भी रक्षा करें. Yes, but there's a difference. लेकिन एक अंतर है. He is especially looked after. The devotee is especially looked after by the Lord. लेकिन जो भगवान का शरण लेते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनका भगवान विशेष ध्यान रखते हैं. इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये चीज लिखते हैं. And going back to the verse from Ramachandra, it actually takes only one time to very sincerely take that step of surrender. और जो हमने पिछला श्लोक पढ़ा, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र बोल रहे हैं कि अगर कोई एक बारी की सच्चे मन से भगवान की शरणागति ले, तो भगवान उसकी रक्षा निश्चित रूप से करेगा. So, tava asmi, I am yours. That's the mantra. और इसमें विशेष चीज क्या है कि भक्त ये प्रार्थना करे, तब अस्मि, कि मैं आपका हूँ. ये विशेष मंत्र. Yachate, somebody who really means it, who prays to the Lord, sincerely, that is taken as into consideration then. तो यहाँ पर एक शब्द आया है, तब अस्मि कि वो बोले मैं आपका हूँ, लेकिन याचते, वो अगर सही मानने में वो सही हृदय से अगर बोल रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तब भगवान जो है उसकी रक्षा निश्चित रूप से करेंगे. It's not just lip service. You don't just say that, oh, I'm yours, and that's my surrender, and now I'm safe. तो वास्तविक रूप में अगर आप मान रहे हैं और आप हृदय से बोल रहे हैं, सिर्फ जीवा से नहीं बोल रहे हैं, आपका मतलब जो है वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, आप सच्ची में उसको आप मतलब रखते हैं जो आप कह रहे हैं. Krishna is within the heart. भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं. So he knows. Does it come from the heart? और वो जानते हैं कि सच्ची में ये इस बात को कह रहा है. Or does it just come from the brain and there's some sound coming out? I'm very surrendered. I love you so much. कि ये सिर्फ जो है बोलने के लिए बोल रहा है, कुछ ध्वनि पैदा कर रहा है कि मैं आपका हूँ और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ. Yeah, words are cheap. और अगर कोई व्यक्ति हृदय से नहीं बोल रहा है, उसको मान नहीं रहा है, तो ऐसे शब्द की ज्यादा कीमत नहीं है. One can say so many things. और ऐसे तो कहने को लोग कितना कुछ कह सकते हैं. But what are you doing? लेकिन आप कर क्या रहे हैं? You may say I love you, but then what are you doing? तो हो सकता है आप कहें मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन आप वास्तविक रूप में उसको कैसे दिखा रहे हैं? So words have to be supported by action. तो जो हम शब्द बोलते हैं उसका समर्थन होना चाहिए हमारे क्रियाओं से. So if one says yes, from now on I am yours. तो अगर कोई ये कहे कि प्रभु मैं आज से मैं आपका हूँ, how does that show itself? तो कैसे अपनी क्रियाओं में, आपकी क्रियाओं में दिखेगा? So we know there are 6 steps of surrender. All these should be visible. तो हम देखते हैं कि शरणागति के 6 अंग हैं. तो अगर आप कह रहे हैं कि मैं आपकी शरणागति लेता हूँ, तो वो 6 अंग जो है आपके जीवन में दिखाई देने चाहिए. And the first 2 are very practical. और पहले 2 जो बहुत व्यवहारिक है. Anukulyena sankalpa. You have to accept what is favorable.
तो आपको क्या करना है कि जो अनुकूल है आपकी भक्ति के लिए, आपकी शरणागति के लिए, क्या उसको आप स्वीकार करते हैं? And practikulina varjanam, you give up things that are not favorable. That's very और जो practical. आपकी भक्ति के प्रतिकूल है, क्या आप उसको त्यागते हैं या नहीं? Then all the others come. You know, you accept the Lord as your protector and your maintainer, and you become humble and you surrender. But if you don't do the first two, how does it show? तो बाकी बाद में आते हैं। बाकी क्या है कि भगवान ये विश्वास रखना कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मेरा पालन करेंगे, विनम्रता का पालन करना, ये सब बाद में आते हैं। लेकिन जो पहले दो हैं कि आपकी भक्ति के लिए, शरणागति के लिए क्या अनुकूल है उसको आप स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं, और जो प्रतिकूल है उसको त्यागते नहीं करते हैं। So, ये व्यवहारिक है। yeah, but if we take this step, and Krishna knows, yes, you are sincere, then he vows, it's a vow, it's not just he's saying, but he takes a vow, then you will be protected for sure, no doubt. और अगर आपके जीवन के व्यवहारिक जीवन में ये 6 अंग भगवान देखेंगे तो फिर निश्चित रूप से हर परिस्थिति में भगवान आपकी रक्षा करेंगे। Yeah. So, you know, then we have to come to that point as Draupadi, then you throw up your hands, whatever now, I'm just depending on you, you know. I can't do anymore. So that one has to come to that stage. तो जिस प्रभुपाद जी कहते थे हम सबको उस स्तर पे आना है जिसमें हम हाथ ऊपर करके भगवान को के प्रति जो अपनी शरणागति दिखा सकें और भगवान को पूरा निर्भर हो सकें। प्रभु आप जो चाहें अब मुझे वो स्वीकार है, मैं आपकी शरण लेता हूँ। But anyway, if it's not bad to chant these 2 mantras also, they're right in the Bhagavatam, it's Vedic civilization. If you're not very into, you know, just chant these and then Krishna will protect the children. तो आप क्या करें कि ये भी प्रमाणिक है कि आप ये जो 2 श्लोक है, क्योंकि भागवतम में इसका वर्णन है, तो आप इन 2 श्लोकों का भी उच्चारण कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस श्लोकों का उच्चारण करने से हमारे जो हम अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं। Well, it says here, it's a simple and practical way to give greatest protection from the greatest danger. Read the तो यहाँ पर लिखा है कि सबसे सरल और व्यवहारिक उपाय है कि हम बड़े से बड़े खतरे से अपनी रक्षा कर सकते हैं। Of course, then we have so many mantras, and the Hare Krishna mantra is our main protection also. You sing Hari's mantras are protection. Krishna, 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 hey, and then Krishna Rakshamam, Paksha, Ahimam, that's also asking for protection. Chaitanya Mahaprabhu chanted that mantra. So you take your pick, you can chant whatever you like. तो बहुत सारे मंत्र हैं वेद शास्त्रों में। नरसिंह भगवान का मंत्र है, नरसिंह आरती हम करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र सबसे बड़ा है। और जैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्णा 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 हे, फिर रक्षा माम पाही माम। तो आप जो आपको आपकी श्रद्धा है आप अपना चुनाव कर सकते हैं और उसको उच्चारण करके अपने भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं रक्षा। Because we need protection, everyone. क्योंकि हम सबको जो है वो भगवान की रक्षा की आवश्यकता है, भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता है। And as we said, money will not do it. और हमने जैसे कहा कि जो धन है वो हमारी रक्षा नहीं कर सकता। Fame will not do it. यश नहीं कर सकता। Being powerful politically or physically will not do it. सिर्फ शारीरिक शक्ति से या पॉलिटिकल शक्ति जो है वो हमें रक्षा नहीं कर सकती। These people who are right there up, not your leader but other leaders, are very proud of being the leader and giving protection to everybody else in the whole nation. तो जो हम बाहरी दुनिया में देखते हैं कि बड़े से बड़ा नेता है, उसको बड़ा गर्व रहता है कि वास्तविक में मैं समाज की रक्षा कर रहा हूँ, उसको पालन कर रहा हूँ। But they cannot even protect themselves. लेकिन वो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते। So they are called fallible soldiers. तो उनको क्या कहते हैं? ऐसे सैनिक Yes. जो जिनका पतन हो सकता है। It's all there in the Bhagavatam. Okay, so let's take protection of the Lord and be happy. तो आइए हम सब मिलकर भगवान की सुरक्षा में रहें और हमेशा खुश रहें। Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. His Holiness Bhakti Gauravani Goswami Maharaj ki jai. So we like to thank Maharaj for his wonderful and kind words and thanking her more time. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.
showering us with this kind association, and that is only possible if you kindly take out time for us. Please keep coming here. So if you have any questions, next year. Next year. How to maintain the spirit of surrender. Well, if we think about it, Queen Kunti, these prayers will come after that verse. She was asking for calamities to happen. तो महाराज कह रहे हैं कि उसी भागवतम के पहले स्कंद में 8वें अध्याय में कुंती मानी की प्रार्थनाएं आती हैं और आगे जाके कुंती मानी ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे जीवन में आप और कष्ट दीजिए. So of course it doesn't mean I recommend, that you suffer greatly, so you are forced to surrender. तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ये प्रार्थना करें भगवान से कि मेरे जीवन में आप कष्ट भेजें ताकि मैं आपकी शरणागति और ले सकूं. But the world is full of all kinds of calamities, 24/7. I mean, continuously. तो ये संसार ऐसा है कि इसमें हर क्षण 24 घंटे असंख्य खतरे का सामना हमें करना पड़ सकता है. So, what you described, that one may be carried away or not remember, it's all due to ignorance. तो ये हो सकता आप जो कह रहे हैं कि मैं भ्रमित हो जाता हूँ और फिर मैं भूल जाता हूँ, ये सब अज्ञानता के कारण है. We forget. हम भूल जाते हैं. Yes. So how do we forget? That is also described by Queen Kunti. और कुंती मानी ये इसका वर्णन खुद भी करते हैं कि हम क्यों भूल जाते हैं. Janma Shruti, Janma Ishvara Shruta Shribir, Eramana Pumak Madan. We become like almost crazy, illusioned, if we get all kinds of material opulence. तो क्या होता है कि जो अगर जीवन के ऐश्वर्य हैं, एक अच्छा जन्म, धन, सुंदरता, विद्वत्ता, ये सब चीजें जो है हमें भगवान का विस्मरण कराती हैं. So therefore she says, this is somebody who is like that, it's very difficult to sincerely, again, surrender to the Lord, approach Him. तो अगर किसी के पास ये सब 4 ऐश्वर्य हैं, तो उसके लिए सही माने में भगवान की शरणागति लेना मुश्किल हो जाता है. Akinchana Gochara, that's better. तो कोई अकिंचन व्यक्ति है जिसके पास कोई धन नहीं है, उसके लिए भगवान की शरणागति लेना ज़्यादा आसान हो जाता है. Which Prabhupada translates, for example, as materially exhausted. और प्रभुपाद जी उसका कैसे अनुवाद करते हैं कि जो भौतिक रूप से हताश हो गया है. Yeah, or somebody who भौतिक जीवन से इसका नष्ट हो गया. or somebody who really does not expect any more material facilities and opulences, to make life successful. जिसकी सारे आशय खत्म हो गए कि भौतिक रूप से उसे और कुछ सुविधा मिल सकती है या ऐश्वर्य मिल सकता है, जिसकी ऐसी उम्मीदें सब खत्म हो गई हैं, वो वास्तविक रूप में भगवान की पूर्ण शरणागति ले सकता है. Because yes, that's just our experience, and life is like that. If things go very well, then we think, well, Krishna is very nice. This life is also very nice. लेकिन अगर हमें जीवन में सुविधाएं मिलती जाए तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ कृष्ण ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जीवन भी बहुत अच्छा है. Yeah, I like Krishna. मुझे कृष्ण अच्छे लगते हैं. I like devotees. मुझे भक्त अच्छे लगते हैं. I like prasada. मुझे प्रसाद अच्छा लगता है. I like kirtan. कीर्तन अच्छा लगता है. But I also like my TV and my car and my this and my dog and so many things I have. And the more I have, the more I like. तो फिर लेकिन हमें लगता है कि ये सब चीज़ें तो अच्छी हैं, मुझे कीर्तन भी अच्छा लगता है, मुझे भक्त भी अच्छे लगते हैं, भगवान भी अच्छे लगते हैं, लेकिन साथ साथ मुझे टीवी भी अच्छा लगता है, मुझे घर भी अच्छा लगता है, गाड़ी भी अच्छी लगती है, कुत्ते भी अच्छे लगते हैं, बीवी भी अच्छी लगती है. And then, if opulence becomes more and more and one enjoys life, and then one thinks, this slogan, life is good. ऐसे वो भोग करते रहे तो उसको लगता है कि जीवन तो अच्छा है. Yeah, LG, they make an advertisement. Life is good. तो LG जो कंपनी है उसका क्या लोगो है? LG मतलब life is good. And if you get one of our monitors, life will be even better. और अगर हमारा टीवी आप खरीद लें तो फिर तो निश्चित रूप से जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा. You spend your money on us, your life will be very good. And our life will be better even. तो
तो अगर आप अपने पैसे थोड़े हमें दे दें, हमारा सामान खरीद लें, फिर आपका जीवन भी बड़ा अच्छा होगा और हमारा तो अच्छा होगा. So anyway, so therefore, knowing this, Queen Kunti says, well, you know, if in that position one will forget you, better actually to suffer, and then we will remember you. So, you know, from between the two, it is better to suffer and remember than to not suffer and forget. तो कुंती रानी कह रही है, अगर ऐसी बात है, तो फिर तो मेरा ये चुनाव रहेगा कि आप मुझे कष्ट देना, कि मैं आपका कष्ट करके आपका स्मरण कर सकूं. तो इन दो दृष्टिकोण में कष्ट प्राप्त करके स्मरण करना, ऐसा जीवन उस जीवन से ज्यादा अच्छा है जिसमें सब सुविधाएं हैं, कोई कष्ट नहीं है और हम भगवान का विस्मरण करें. But of course, if we can manage not to suffer too much and still remember, that's better. तो उससे ज्यादा अच्छा ये है कि अगर हम ऐसा जीवन जी सकें जिसमें हमें कष्ट ना भी हो, लेकिन फिर भी हम भगवान का आश्रय ना खोएं. Because sometimes if suffering is too much, we become absorbed in suffering and lamentation, and then we also forget Krishna. तो कभी-कभी क्या होता है, जब कष्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो तब भी हम अपने कष्टों में अपना मन को लगा देते हैं और शोक में हम भगवान को भूल जाते हैं. But anyway, if let's say your life is quite smooth, everything is very nice, and therefore sometimes or most of the time I don't remember Krishna. If that is a problem, you know. और अगर ऐसा हो रहा है कि हमें जीवन में बहुत सारी सुविधाएं हैं और इन सुविधाओं में फंस कर मैं भगवान का स्मरण ही नहीं कर पा रहा हूँ. So then we have to cultivate knowledge. तो then हमें ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए. By reading and hearing Srimad Bhagavatam, we remember what is our real position and what is the position of the world and its nature. तो हमें संबंध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए भागवतम में से कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या स्थिति है, इस प्रकृति की, इस संसार की क्या स्थिति है. Yeah? And you may look a little bit at the news every day, so don't forget that there's suffering everywhere. अगर आप सिर्फ न्यूज़ ही खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे संसार में इतने सारी परेशानियां हैं. Now you ask somebody from Australia, they will tell you. अगर आज आप किसी ऑस्ट्रेलियन से पूछे तो आपको बताएंगे. The whole country is being burnt down. पूरा देश जो है वो जल रहा है. So, you know, this may happen anytime, or a flood, or a volcano, or an earthquake, or a hurricane. You take your pick, which one you prefer. So, आंधी, तूफान, भूकंप, ये सब चीजें जो हम देखते हैं, आप अखबार पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें पढ़ने में आएंगी. This last, हमारे ऊपर है कि हम क्या भोगना चाहते हैं. last year in the Caribbean, there's these wonderful islands where everybody goes to enjoy life. You know, Caribbean islands, like paradise practically. तो पिछले साल जो है जो कैरिबियन आइलैंड है जहाँ पर कई लोग पर्यटन करने के लिए जाते हैं. Then the hurricane comes and everything is destroyed completely. Practically doesn't exist anymore. और वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है और सब चीजें वो वहाँ खत्म हो जाती हैं कि जैसे थी. Now you live in the Philippines and then this volcano erupts and everything is covered by ashes and lava. Or in Hawaii it happens. Hawaii is another paradise island. Then the volcano erupts, everything is covered by lava. जैसे आप कुछ देश ऐसे फिलीपीन, हवाई, वहाँ पर ज्वालामुखी से क्या होता है, वहाँ से जो है वो लावा निकलता है और पूरे देश को ढक लेता है. You live in California, best place in the world. Then the earthquake. और कैलिफोर्निया जाएं, दुनिया के सबसे सुंदर शहर है, वहाँ भूकंप आ जाता है. Anyway, so, you know, by remembering these things, you don't become too much illusioned that life is good. ये सब चीजों को देखकर हम भ्रमित नहीं होते कि नहीं जीवन बहुत अच्छा है. Material life is not good. भौतिक जीवन अच्छा नहीं. It's dosha and dukkha. That's what Krishna says. भगवान क्या कहते हैं कि ये असली दुख है, असली दोष है. And he knows because he engineered it. और वो जानते हैं क्योंकि उन्होंने बनाया है. He is the programmer. He knows his program. उन्हीं की ये संरचना है तो जानते हैं कि इसकी क्या गुणवत्ता है. And it's not going to change. It's an eternal program going on and on and on. ये शाश्वत गुण हैं, ये बदलने वाले नहीं. Dukhalayam ashashvatam. I mean, you know, we just have to remember and be convinced of this. Then you don't become illusioned seeing these beautiful people, rich and famous. You know how long it will last. A few years and finished. तो
भगवान कहते हैं दुखालय शाश्वतम है। तो जब उस दृष्टिकोण से आप संसार को देखते हैं कि आपको कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति भी देखता है, लेकिन आपको पता होगा कि बड़ी जल्दी जो है कभी भी खत्म होता है। Here you have all these movie stars, right? Yeah. So much illusion. And they are living the high life. You know, they have also so much money they don't know how to spend it. जैसे ये फिल्म स्टार हैं, तो उनका जीवन देख सकते हैं, वो ऐसा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते हैं, उनके पास जितना पैसा वो नहीं जानते हैं कैसे खर्च। Anyway, we can go on and on and on. But, you know, just don't forget, become conscious of how the world is, then you don't have that problem. तो आप बस इस बात का ध्यान रखें कि आप ये चीज़ को अपने हमेशा मन में रखें कि कैसे इस संसार की प्रकृति है, ताकि आप हमें। Yeah, the problem is this, Maya means forgetfulness, illusion, and seeing things that are not really real. माया का मतलब क्या है कि वो भ्रम पैदा करना और देखना कि क्या सत्य नहीं है, सत्य से दूर होना। Yeah, if we think money and fame is success in life, it's illusion. तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, कोई सोचे कि पैसा और यश जो है वो जीवन की सफलता है। If you think money, fame, power, right? These are like the main, and health, of course. You want to be healthy to enjoy it. And if I have this, then life is fantastic. Yes. लोगों को लगता है कि जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर मेरे पास पैसा होगा, यश होगा, कुछ शक्ति होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा। In that sense, it's better to have some situation where you're actually suffering, which reminds you every single day, this is not it. This is not real life, and you surrender to Krishna just to be protected and, you know, go back home, back to Godhead. तो ऐसे जीवन से ऐसा जीवन ज़्यादा अच्छा है जिसमें हमें हर रोज कोई कष्ट आता हो, ताकि मैं सोच सकूं कि हाँ ये वास्तव में जीवन नहीं है, ताकि मैं कृष्ण का आश्रय ले सकूं और फिर भगवत धाम जा सकूं। All right. Thank you, Hare Krishna. Just like you mentioned that actually we have to, what is it? Actually the surrender has to be unconditional, as you said that the surrender has to be unconditional. The surrender has to be unconditional, yes. Well, it should be that. You can even start conditional, but surrender. So Srila Prabhupada gave one example that in World War, both the parties, women prayed that their husband become victorious. Right. And then both of them, like Krishna has to make a choice, only one party will become will have a victory. The other party, the women became like atheist. So in the beginning of the stage of the Krishna consciousness, in the neophyte stage, many times we don't understand that what Krishna is protecting. So because we take that Krishna's protection, it means that Krishna will protect everything. He will protect my standard of living also, he will protect my status quo also. He will protect my all the false shelters which I have maintained. So by not understanding Krishna's protection, many times the devotee loses the enthusiasm in Krishna consciousness. So can you please explain that how to hold on this? Now I have to try to understand exactly what you said, even acoustically. So you say in the beginning stages, how is it? One, maybe without the mic I understand you better and I repeat. He's saying, Maharaj, that when we say that Krishna protects. Krishna protects, yes. So devotee feels that Krishna will protect my standard of life also. That Krishna will protect my living standard and my status quo. My status quo. And my comforts. Okay. And my false shelters of this world. Uh-huh. And if they get disturbed, then a devotee loses faith that how Krishna is protecting. I am losing everything. Again, it's ignorance. Eh? Because, I mean, you know, yo vidadhatu kama. Krishna will fulfill the desires of all the living entities as long as they deserve it. तो प्रभु जी का प्रश्न था कि जब कोई भक्त भगवान की शरणागति लेता है तो वो उम्मीद करता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो अज्ञानवश क्या होता है कि वो ये सोचता है कि भगवान जैसा जीवन का स्तर मैं जी रहा हूँ, जैसे मेरा धन है, मेरा जो ऐशो आराम है, भगवान उसकी भी रक्षा करेंगे। और जो मैंने कुछ झूठी चीज़ों का आश्रय लिया हुआ है संसार की, उसकी भी रक्षा करेंगे। लेकिन जब उसमें कोई परेशानी आती है तो वो अपनी श्रद्धा खो देता है भगवान की रक्षा में।
तो कैसे समझे कि भगवान की रक्षा क्या है? तो महाराज कहते हैं कि ये इसलिए होता है कि ये जब कोई अज्ञान में होता है तो ऐसा होता है। तो असली भगवान की रक्षा क्या है वो महाराज बताएंगे। So this is a very interesting subject. We'll try to make it short, but it's not easy. So Krishna, he fulfills all the desires of the living entities according to their merit, according to their karma also, because sometimes you may desire but you may not get what you want. तो भगवान जो है हर जीव की इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन जितना वो उस इच्छा पूरी करने की योग्य है, भगवान योग्यता भी देखते हैं। हो सकता है उसका कर्म ना हो, उसकी इच्छा जरूर हो, लेकिन वो योग्य ना हो तो भगवान पूरी नहीं करेगा। But let's say, okay, a neophyte devotee, he still wants to protect his money and his situation and family and whatever is there, and he hopes that Krishna, he says he will protect, so he will protect. That's his hope. एक नौसिखिया वक्त जुड़ता है तो उसके मन में होता है कि भगवान मेरे पैसों की रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरे व्यवसाय की रक्षा करें, और भगवान उसको इस स्थिति में देखकर उसकी रक्षा, इन सब चीजों की रक्षा करते भी हैं ताकि उसके विश्वास बढ़े भगवान को। And as far as I understand then, especially if that neophyte devotee is offering services and doing this and that and giving donations to the temple and thinking that he is serving in so many ways, and then something happens against this, what seems there's no protection, then he becomes like discouraged or even loses his faith. Right? That's understanding? Okay. तो एक ऐसी नौसिखिया वक्त को लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो देखता है कि वो सेवा भी कर रहा था, मंदिर में दान भी दे रहा था और जो है वो सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन वो देखता है कि अचानक जो है वो अपने धन को खो देता है या वो किसी परेशानी में आ जाता है। तो फिर उसको लगता है कि जब मैं भगवान की सेवा कर ही रहा था फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो हो सकता है कि वो हतोत्साहित हो जाए या फिर अपनी श्रद्धा भी खो दे। But that again, it's a lack of understanding, a lack of knowledge. ये इसलिए है क्योंकि उसको सही ज्ञान की कमी है। That devotee should read prayer of Queen Kunti and the purports. तो उसको क्या करना चाहिए? कुंती महारानी की प्रार्थनाएं पढ़नी चाहिए तात्पर्य के साथ। Especially these two verses that she's praying for calamities, and this Janmaishvara Shruta Shribil verse. खासकर ये दो श्लोक जो चर्चा की, कैसे जन्माश्वरा श्रुता श्रीबीर वाला और कैसे कुंती महारानी जब And then also, प्रार्थना करती। if one studies, one will also come across the verse in 10th canto where Krishna tells Yudhishthira Maharaj that if I favor somebody, I may take away everything. और ये भी श्लोक को आप पढ़ें जिसमें भगवान युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि जब मैं किसी को विशेष अनुग्रह करता हूँ तो उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। Or one may study Manasadeha Geha, and Bhaktivinoda Thakur instructs us, Marovi Rakovi Yo Ichcha Tohar. You may kill me, you may maintain me, whatever, it's up to you, because, that's surrender. या फिर हम भक्ति और ठाकुर महाराज की जो प्रार्थना है कि भगवान से कि आप चाहे मुझे मारें चाहे मेरी रक्षा करें, मैं आपका हूँ। तो जब ऐसी चीजें पढ़ता है तब वो और शरणागत भगवान के होगा। And we should, remember Shikshastakam. I mean, it's all due to ignorance, this kind of thinking. ये सब सोच जो है अज्ञान के कारण है। जब चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम पढ़ेगा। What is he praying? Naranam, Najanam, Nasundarim, Kavitam, Vajagadisha Kamaye. All these things that I want to be protected, he says, I don't want. तो जब शिक्षाष्टकम पढ़ेगा तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे यश चाहिए, जन चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए। तो जिन चीजों के लिए वो पहले प्रार्थना कर रहा था कि भगवान की रक्षा करेंगे, वो चैतन्य महाप्रभु उसको ठुकरा रहे। When Prabhupada quotes this verse, he says, okay, you don't want this, you don't want this, what do you want? तो प्रभुपाद जी श्लोक का उल्लेख करते हुए बोलते हैं कि अगर भगवान से कहेंगे कि ठीक है तुम्हें ये धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, तो तुम्हें क्या चाहिए? Even Janmanishvare means I don't even want to be liberated, I don't want even moksha, I don't want. So what you want? तो मोक्ष भी नहीं है, क्योंकि श्लोक में भगवान कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि कई जन्मों तक जो है मुझे मतलब कई जन्म मैं लेने को तैयार हूँ। So मोक्ष भी नहीं चाहता। I to keep bhakti. I just want to be, if you want, if you let me, be engaged in your devotional service without any motive.
तो मुझे एक ही चीज चाहिए कि मैं आपकी अहेतु की भक्ति कर सकूं, बिना हेतु के, बिना किसी स्वार्थ के, हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहूं। Ahituki, Bhavadat Bhakti, Ahituki Tvaya. Just your service, that's all I want. मैं सिर्फ आपकी प्रेम में सेवा चाहता हूँ। And then you can kill me or you maintain me, I don't care. चाहे मुझे मारें, चाहे मेरी रक्षा करें, मुझे परवाह नहीं, Because I know I'm eternal anyway. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं शाश्वत हूँ। So, kill me, what means? I have to give up the body, and then wherever you take me, I can continue my service in whatever condition. तो मुझे कहीं भी ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं आप शरीर तो हूँ नहीं, तो शरीर ही मरेगा। तो हमें कहीं भी ले जाए, मैं जाने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप। And I have to be born again. I prefer to be an insect in the house of a devotee instead of Brahma who is adverse. How is that possible? तो अगर मेरा जन्म होना भी है, तो ऐसी जगह मेरा जन्म हो जिसमें मैं भक्त के घर में एक कीट बन जाऊँ। So, ऐसे ब्रह्मा बनने की जगह जो कि आपसे विमुख है। okay, these are very high levels of, surrender, but we should know it at least. We don't become bewildered by these other ideas. Even if we are not on that level, but we should know we want to get there. तो ये बहुत ऊंची प्रार्थना है। तो हो सकता है कि हम उस स्तर पे ना हो, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए कि वास्तविक रूप में ये भी स्तर है भगवान के भक्तों का और भक्ति का। So a person then who is in that situation, who may lose something and becomes like discouraged, he should be very grateful. Krishna is helping him to surrender more. तो अगर कोई ऐसे So you have to preach to that person, to give the right understanding. It's all ignorance. तो ऐसे भक्त को प्रचार करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसको ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि उस अज्ञान में वो हतोत्साहित हो रहा है, और इस ज्ञान से वास्तविक रूप में वो भगवान की भक्ति ज्यादा शरणागत हो गए, तो उसको बता सकते हैं कि भगवान चाहते हैं तुम ज्यादा उनकी शरणागति लो। Yes, avidya, that's our enemy. अविद्या वो हमारा शत्रु है। So we have to get vidya. Vairagya, vidya, nija bhakti yoga. That's the point. Anyway. क्या चीज जाने को है कि चैतन्य महाप्रभु ये देने क्या है, वैराग्य विद्या। Yeah. All right. So I think now we have to stop. Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. परम पूज्य भक्ति गौरवाणी गोस्वामी महाराज की जय।